hoping for a response from you, right? Reaction और response में थोड़ा सा फर्क है, right? हाँ जी. Reaction is कि it's usually an outburst. It's response is how you respond to a crisis or a challenging situation, or how somebody speaks to you. तो आप दोनों ही नहीं करते. उस टाइम मेरे पास रिस्पॉन्स नहीं है. हाँ. तो मैं चुप रहता हूँ. आप चुप रहते हो. या बिहेविंग मतलब चुप रह जाता हूँ, या रिएक्ट नहीं करता, या रिस्पॉन्ड नहीं करता. ये बोलते ये भी नहीं कहता कि बाद में बताऊंगा. अच्छा, ये नहीं कहते आप. ओके. सो of course another way out in such a situation is let me come back to you. Yes. You know, so सिर्फ ये बोलने से acknowledge हो जाता है. That's a response. It's a form of response. सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि सामने वाला ये भी सुनना चाहता है कि let me come back to you. हाँ, बट ये ज़्यादातर ऑफिस में होता है आपके साथ. हाँ. जनरली घर पे ऑप्शंस नहीं मिलते हैं. ऑफिस में तो ऑफिस यू कैन मैनेज. Sometimes अगर हाँ, पापा और बड़े ब्रदर साथ में तो हाँ, वही घर पे नहीं, घर ऑफिस पे में भी नहीं होता है, होता. बट घर पे कम होता है. घर पे कम होता है. हाँ. ओके. Interesting. Anybody else? How do you manage stressful situations at work, pressure situations, when you're under the pump? What do you do? किसके लिए सर? सबसे पूछ रहे हैं. Leaves right आराम से. जो मतलब पहले शांति शांति मतलब I talk to myself शांत शांत शांत. कर पाते हो आप हमेशा? मतलब अभी रिसेंटली की बात है. फैक्ट्री में मतलब चोरी हुई रिसेंटली. तो एंड सुपर एग्रेसिव. मेरा तो मन होता पकड़ मारो पकड़ के पूछ जाओ इसका. मी सचिन जी अंकित एंड सुमित वाज स्टैंडिंग. तो भैया प्लीज आप हाथ मत छोड़ना. तो यू जस्ट टेक काम. मतलब इट वाज वेरी टफ बट ठीक है. वाज लाइक कि नहीं. बट मैंने कहा कि अगर 5 मिनट से थप्पड़ नहीं मारा ना फिर मैं मार दूंगा. मारना पड़ेगा जाना. काफी प्रैक्टिस कर पा रहे हो लग रहा है. 5 मिनट तक कर पा रहे हो. बट कई बार नहीं, कुछ गजब पार्टियों को कर रहे हो. इट डिपेंड्स कि कितना एक्सट्रीम हो रहा है. तो मतलब नॉट अगर गलत है तो इट्स वेरी हार्ड टू टेक. मतलब आई हैड टू टेक दिस. I mean, so that's exactly where the challenge is, right? So if you know, Navjot Singh Sidhu is currently in the jail. यस ही इज. He's extremely talented guy. I have personally worked with him when he was the deputy CM of Punjab. Exceptionally brilliant guy, very dedicated, very hardworking. Probably the only non-corrupt politician in Punjab. Right. Yet he is in jail because he lost his cool and slapped somebody who, out of shock, had a heart attack and died. ये आपको पता है ना स्टोरी? नहीं मालूम है? आई थिंक इन 2003 हाँ. दैट इंसिडेंट हैपेंड. हाँ, गाड़ी पे जा रहे थे, हाईवे पे जा रहे थे. 10-15 years back. हाँ. 1983 और नहीं, 83 नहीं, 2002 2003 की बात है. 15-20 साल हो गए. या 7 की बात है, ऐसे कुछ है. गाड़ी पे जा रहे थे हाईवे पे, तो सामने वाले ने गाड़ी ठोक दी. सिद्धू जी बाहर आए. थोड़े से एजेड थे वो, ठीक है, मे बी इन 50s 60s, नॉट टू एजेड बट समबडी. तो वही ऐसा गुस्सा आया, रोक नहीं पाए. सिद्धू इज अ स्ट्रॉन्ग टॉल गाय, इज अ जाट, पंजाबी yeah. जाट. हाथ बहुत बड़ा है उसका. घुमा के एक लगा दी. वो बंदा वहीं कोलैप्स हो गया. आफ्टर फ्यू मिनट्स ही डाइड. His intention was not to kill, but he ended up killing a वो person. रिएक्शन था एक्चुअली. Right? He could not control his calm. Lifetime का regret. Kept fighting this case, kept fighting this case. End में जाके finally had to go into jail. पॉलिटिक्स से भी कुछ मिक्स हो गया शायद. I mean, वो तो हो जाए. see, he was punishable, right? It was a punishable crime. Even if it was inadvertent, he ended up killing a person. Right? So you eventually can't escape as much as you try. So I think this is a very extreme example, but we are causing a lot of damage to people, even if it's their mistake on something. But a bigger damage is happening to you, which is the invisible damage. Right? So that all that stress which keeps getting pumped up, either by staying silent or by shouting, either way, is somewhere impacting your vital parameters.
health parameters. And अगर वो हो रहा है, तो somewhere down the line it is going to also hamper your ability to build a business, to grow a business, take care of your family, and so on. Right. About 3-4 days back, this guy Anshu Jain passed away. Anshu Jain was just 62. He was the global CEO of Deutsche Bank for several years. And he was one of those rare Indians who went on to head a global multinational bank, and that to German origin. सोचो जर्मन्स नहीं इंडियन को, मतलब अमेरिकन रख लें तो आजकल नॉर्मल है. जैसे ट्विटर में भी आजकल वो पराग अग्रवाल है, राइट. बट एट दैट टाइम, यू नो, दिस इज योर 2012, 13, 14 का पीरियड. सो एन इंडियन CEO of a German bank, right, but he had a couple of hard moments in the end, and he was asked to leave for mistakes he think he did not commit. So although Deutsche Bank gave him everything in life, but in the end they took away everything from him. I mean, but they didn't take away anything, it was just hurt. I was hurt, and he was so hurt. Then within 6 months after leaving Deutsche, of course जॉब तो ऐसे लोगों को मिल जाती है यार, सीधा वो 15-20 मिलियन डॉलर की जॉब मिलती है, कोई छोटी मोटी भी नहीं मिलती. तो पैसों की तो कोई कमी नहीं है लाइफ में, राइट. But 6 months within leaving Deutsche, he was diagnosed with cancer of a certain kind. And till the last moment of his breath, he kept blaming Deutsche Bank for that cancer. Consciously. कि I hold them responsible. They gave me so much agony, hurt, stress. Right. तो सोचो हम चीज़ों को कितना इम्पोर्टेंट बना लेते हैं अपने लिए, कि उसके पीछे हम अपने आप को भी ख़त्म कर देते हैं और दूसरों को भी ख़त्म करते हैं. So this is not just another topic. This is a very tough topic to understand, implement, appreciate. And it is most important also, actually. I think it is the most important. Most important, yes. तो हमारी बात हुई थी ना, डिलीवरी डे है. You have to deliver this properly because you have to be ready for it. All of you are now, I think, minimum 35 in age, all the way up to 50-55 I can see in this group, right. 35 is usually the cutoff age, after which you can't fool around, either with yourself or with others. उससे पहले फिर भी सब कुछ चल जाता है. उसके बाद all the problems start to happen with your body, with your relationships, with your families, right. So it's basically, I would say, time to grow up. Yes. Right. And growing up का जो सबसे critical aspect है, वो ये है कि are you mindful? What is the opposite of being mindful? Stress. Out of mind. Mindless. Mindless. So you have to be a bit harsh on yourself. Are you being mindless?